हाय एवरीवन। सो हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स को, थोड़ा सा करने वाले हैं, लाइक कंप्लीट नहीं होगा। बेसिक मैथमेटिक्स में आपके पास टॉपिक्स आते हैं डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, कुछ थोड़ा बहुत कोसाइन से रिलेटेड आपके पास ट्रिग्नो आती है, फिर ग्राफ्स आते हैं, स्लोप आता है। ठीक है, तो हम जितना कवर कर सकते हैं विल ट्राई आवर बेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले ना मैं एज्यूम करके चलूँगी कि आपको ट्रिग्नो की वैल्यूज़ 0 से 90 तक की याद होंगी। ठीक है, कोस, साइन और टेन की। ठीक है, तो कुछ चीज़ें जो मैं आपको बताने वाली हूँ, सबसे पहले एक चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं कि जो साइन थीटा की वैल्यू होती है वो हमेशा -1 से 1 के बीच में ही मिलेगी। दैट कैन बी -1, दैट कैन बी 1। ठीक है, बट यहाँ पर इन्फिनिटी आपको खुद ही पता है इन्फिनिटी तक जाती नहीं है, क्योंकि कई केसों में आपको देखने को मिलेगा जिसकी टेन में वैल्यू हमारी इन्फिनिटी तक चली जाती है। तो चलो फिर इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आपकी साइन थीटा की वैल्यू कुछ -1 से स्टार्ट होगी। ठीक है, और कहाँ तक जाएगी? 1 तक। वैसे ही आपकी कोस की वैल्यू भी यहीं पर यही क्राइटेरिया रहेगा। ठीक है, -1 से लेके 1 तक होती है। फिर अगर मैं बात करूँ टेन की, तो वो -इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक होती है। ऑलराइट, अब हमें देखना है एक स्टैंडर्ड ट्रायंगल। ठीक है, एक स्टैंडर्ड ट्रायंगल जो आप फिर से याद रख सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा याद करने वाली चीज़ें बता रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ स्टैंडर्ड ट्रायंगल की। ठीक है, हमारा स्टैंडर्ड ट्रायंगल कौन सा? जिसकी साइड्स आपको पता है 3, 4, 5 होती है, 5 हाइपोटेन्यूज होता है। तो चलो इसको ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारा 5, ये 3, 4। ठीक है, सो बेसिकली ये यहाँ पर 90 डिग्री पर है। ठीक है, ये 90 डिग्री पर है। और अब देखो क्या होगा, बेसिकली जो छोटी साइड है आपकी, ठीक है, मतलब 3, ये वाली साइड, छोटी साइड ये है ना, तो इसके जो पास वाला हमारे पास एंगल रहने वाला है ये होगा हमारा छोटी साइड वाला 53 डिग्रीज। और ये जो बड़ी साइड वाला है इसकी साइड मिलेगा आपको 37 डिग्रीज, है ना। तो जो बड़ी लेंथ है, ठीक है, जहाँ पर आप जिसको बेस अज्यूम कर रहे हो, ठीक है, तो अगर वो बड़ी है, मतलब 4 है, 3 से बड़ी है, तो उसके साइड वाला जो एंगल होगा वो कौन सा होगा? छोटा होगा। लेकिन अगर बेस आपका जो है छोटा है तो आपकी जो एंगल की वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी। ये अब कहाँ काम आएगा? आपको बेसिकली किसी केस में आपको आपसे पूछ लिया जाएगा साइन 37 पूछ लिया, कोस 53 पूछ लिया। अब इनको हम फाइंड करके भी ट्राई करेंगे। टेन 37 पूछ लिया, सेक 37 पूछ लिया, 53 पूछ लिया, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो साइन 37 आप फटाफट क्या करोगे जब आपको 37, 53 दिखेगा? तो सबसे पहले एक स्टैंडर्ड ट्राइंगल ड्रॉ कर लोगे 3, 4, 5 का। अब साइन 37 के लिए, ठीक है, ये देखो, अब 37 इस एंगल की हम बात कर रहे हैं, इसके लिए बेस कौन होगा? 4 होगा। इसके लिए परपेंडिकुलर कौन होगा? 3 होगा, राइट। ठीक है, तो अब अगर मुझे वैल्यू लिखनी है वो मैं क्या लिखूंगी? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर मेरा यहाँ पर 3 होगा और हाइपोटेन्यूज 5 होगा, सो इट वुड बी 3/5। एंड अब जैसे मुझे निकालना है कोस 53, ठीक है, कोस 53 निकालने के लिए मैं क्या देखूंगी? 53 वाला एंगल देखूंगी सबसे पहले इसका। अब मुझे इसके लिए बेस चाहिए। बेस मेरा कौन होगा? 3 होगा और हाइपोटेन्यूज कौन होगा? 5 होगा, तो 3/5 इज द वैल्यू। ठीक है, tan 37 के लिए हम क्या देखते हैं? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो 37 एंगल के लिए बेस तो जो है 4 हो जाएगा और परपेंडिकुलर 3 हो जाएगा, तो 4/3 बेसिकली हम यहाँ लिखने वाले हैं। एक्चुअली नॉट 4/3, क्योंकि बेस बाय परपेंडिकुलर मैंने लिख दिया। ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो 3/4 होगी इसकी वैल्यू, राइट। तो यहाँ आपको स्टैंडर्ड ट्राइंगल थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। अब बात करते हैं जो एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा है उनका क्या। ठीक है, सो एंगल्स मोर देन 90 डिग्रीज। तो इसके लिए मैं एक कार्टेशियन प्लेन सबसे पहले ड्रॉ कर लूँगी। अब आपने कुछ ऐसा सुना होगा, ऑल स्कूल टू कॉलेज,
ठीक है, यहाँ पर आपकी सभी ट्रिग्नो की वैल्यूज ऑल, ठीक है, ऑल ट्रिग्नो क्या होती हैं, वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, ठीक है। और यहाँ पर होती है साइन और उसके इनवर्स की, साइन और कोसेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अच्छा, फिर आप आगे चलोगे टी, टैन और उसका इनवर्स यानी कि कोट, यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। फिर आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और उसका इनवर्स यानी कि सेक, यहाँ पर पॉजिटिव होगा। अब मैं आपको सिखाऊंगी कि इसका काम क्या है, ठीक है, कैसे आप बड़ी वैल्यूज़ की, मतलब जो साइन है, कोस है, ट्रिग्नो, ठीक है, वैल्यूज़ निकाल सकते हो आप। तो लेट अस से आई एम टॉकिंग अबाउट साइन 120 डिग्रीज, ओके। तो नाउ यू हैव टू ब्रेक इट, ठीक है, मतलब आप चाहो तो आप इसको 90 + 30 करके लिख लो, या फिर आप इसको 180 की फॉर्म में लिख लो, 180 - 60, ठीक है। अब आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं। बेसिकली क्या होता है, आप क्या कर रहे हो, इसको 90 के कुछ मल्टीपल की केस में लिख रहे हो, ये इसको आप 90 × 2 - 60 बोल सकते हो, ये तो 90 × 1 + 30 बोल सकते हो। सो नाउ व्हाट मैटर्स हियर इज आपने किस नंबर से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। ओड ले रहे हो, जैसे कि इस केस में क्या है, ओड है, और इस केस में इवन, ठीक है। अब अगर आप ओड वैल्यू मतलब से मल्टीप्लाई करो, ओड नंबर से 90 को, फिर उसकी फॉर्म में आप जो है 120 को लिखने की कोशिश कर रहे हो, तब क्या हो जाता है, आपका जो साइन है ओड के केस में वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कोस में, ठीक है। टैन किस में कन्वर्ट हो जाता है, कोट में, ठीक है। ध्यान रखना, साइन कोसेक में नहीं, साइन कोस में कन्वर्ट होगा, ठीक है। देयर इज नथिंग अबाउट रेसिप्रोकल एंड इनवर्स, ठीक है। सेक आपका कन्वर्ट हो जाएगा कोसेक में, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, आप सिंपली इसको, आप देखो आपने इसको किसकी फॉर्म में लिखा, एक ओड से मल्टीप्लाई करके 90 को, तो अब क्या होगा, आप सिंपल सी बात है, आप इसको लिखोगे कोस और फिर ये वाला एंगल 30, ठीक है। तो कोस 30 आप बेसिकली इसको लिख सकते हो। आई नो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, बट यू विल गेट टू नो आज जैसे आप प्रैक्टिस करोगे। अब एक बार इस साइड देखते हैं तो इस केस में आपका कुछ भी चेंज नहीं होगा क्योंकि इवन है, ठीक है। तो आप इसको सिंपली क्या लिख दोगे, साइन 60। अब साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, ठीक है। अब इधर आओ, कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, 1 और फिर √3/2, सेम ही बात है। इट डिपेंड्स अपॉन यू, आप किस चीज़ को थोड़ा सा फेमिलियर हो या फिर ईजी लगता है, यू कैन गो विद इट। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको चेंज करना पड़ता है। तो आई वुड से कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा इवन से मल्टीप्लाई करके कुछ फॉर्म में लिखने की कोशिश करो। अब है हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज जो कि मुझे फ़िलहाल याद नहीं है, बट आई हैव टू लर्न दैट, ठीक है। सबसे पहले आती है, लेट अस ट्राई टू जोट देम वन बाय वन। So which color to choose? Okay, so this one. Okay, so first of all I have sine a plus b. Now a plus b यहाँ पर कुछ एंगल है, लेट अस से 90 + 30 अंदर लिखा है ना। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, लेट से साइन 40 + 50 लिखा है ना। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, तो बेसिकली क्या होगा, you are going to open it and it would be sin A into cos B and then उल्टा कर दो, it means अब sin की जगह cos की जगह sin, so it would be cos A sin B. This is how you can open this, okay. Sin A plus B is equal to sin A cos B plus cos A sin B. Okay, the next identity is sin A minus B now. ओके, सो इट्स जस्ट सेम, बस हमारा यहाँ पॉजिटिव की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव की जगह हम लगा देंगे एक नेगेटिव साइन। सो लेट्स जस्ट कॉपी एंड पेस्ट, या सो दैट्स ऑल। ओके, नाउ
लेट्स लुक एट दिस, साइन 2x आपको दे रखा है, ठीक है, साइन 2x, तो ब्रैकेट ना लगाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, साइन x प्लस एक्स, क्या इसको लिखना पॉसिबल है? यस ऑफ कोर्स इट इज़। कुछ नहीं है, जो ऊपर किया था वैसा ही करना है, ठीक है। मतलब इसको कैसे लिख सकते हो, साइन x कोस x प्लस साइन एक्स, सॉरी कोस x एंड साइन x, आई मीन सेम ही रहेगा वैसे तो, कोस x, ठीक है, कोस x, आई एम रियली सॉरी फॉर द एरर्स, कोस x साइन x। सो इसको आप कैसे लिख सकते हो, 2 टाइम्स ऑफ साइन x कोस x। यू हैव टू जस्ट याद रखना है इसको, आपको प्रोजेक्टाइल में देखने को मिलेगा आई गेस ये आपको, ठीक है, ये आप इसको याद रखो, ठीक है। साइन 2x, अगर आपको 2 टाइम्स साइन x कोस x मिल रहा है, यानी कि मान लेते हैं 2 टाइम्स साइन 30 कोस 30, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी साइन 2x के बराबर। ओके, सो नाउ लेट्स मूव फर्दर, एंड अब मेरे पास सेम इसी वे में कोस है, ठीक है। ओके ओके, सो कोस a प्लस b, what do you think it would be? Okay, so it is cos a cos b, and now आपको पॉजिटिव साइन नहीं लगाना है, इट इज गोइंग टू बी नेगेटिव, ठीक है। फिर आपके पास आएगा cos b cos a, नॉट एट ऑल लाइक दिस, आई एम रियली सॉरी, यहाँ पर आपका साइन आएगा, साइन b साइन a। So this is how you're supposed to solve these identities. Okay, ये चीज़ें याद करने वाली हैं, there is no explanation for that, अभी मेरे पास तो नहीं है, ठीक है। a माइनस बी के केस में आप माइनस की जगह प्लस लगा दोगे, the rest goes same, cos a cos b प्लस sin a sin b। Okay, okay, so we have similarly we have cos 2x, which can again be written as cos x plus x, and then you can just take the help of this identity, and it would be cos x plus sin x sin x, is it? So it would be cos square x minus sin square x. Okay. Okay, so now we have tan a plus b. Okay, so it will be tan a plus tan b divided by 1 minus tan a tan b. Have you noticed this one thing कि हमने यहाँ पॉजिटिव लिया था और हम यहाँ नेगेटिव ले रहे हैं? Yes, to take care of that, यहाँ पर आप पॉजिटिव, यहाँ पर आप नेगेटिव लेने वाले हो। साइन की बहुत इंपॉर्टेंस है, इसीलिए आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट दैम। ओके, नाउ आई हैव tan a minus b. Okay, so it would be tan a, and yeah, I'll just let you know about the sign. Okay, and then tan a tan b. Okay, so it would be plus this time here and negative sign over here. Okay, okay, so I expect you to learn these identities, it's really gonna be useful. And उसके बाद हमारे पास कुछ ये वाली आइडेंटिटीज़ हैं, ये हम 10th में पढ़ चुके हैं, ये हम 10th में पढ़ चुके हैं, ये नहीं है हमारे लिए। 1 प्लस कोस 2x इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वेयर एक्स, and 1 minus cos 2x is equal to 2 sin square x. Okay, so now let's try using them, let's try putting them into use. Okay, so first of all let's try to find the value for sine 15 degrees. Now you know the values of some specific angles at some specific angles, right? So you know what's going to be the value of sine 45, what's going to be the value for sine 30, but you do not know what is going to be the value of 15 degree. Okay, that is where the identities here comes. So now we can write it as sine
45 minus 30, right? And yeah, do make sure that the numbers you are selecting here, you're putting this 15 in some other form, that is 45 minus 30. You should be knowing the values of 45 and 30, then only it's going to work. Okay, so now let's expand this. We have learned the identity sine A minus B is going to be sine A cos B minus sine B cos A, right? Now let's try using this identity. Okay. So now it will be sine 45 cos 30 minus cos 45 sine 30. So now what is the value for sine 45? It's 1 root 2. And what's the value for cos 30? It's root 3 by 2. Okay, now cos 45 is 1 by root 2, and then it's sine 30, it's 1 upon 2. Okay, so it would be root 3 to root 2. It would be 1 upon 2 root 2. It would be root 3 minus 1 to root 2. So this is the value for sine 15 degrees. Okay, so now we can keep on practicing. Like, let's find the value for tan 75. So now tan 75, it can be written as 90 minus 15, but yeah, do take care of that. I just told you, you cannot just write it in any form. Okay, you need to know the values of those both two numbers in whose form you are depicting the angle, okay, which you are supposed to find the value of that at that angle. I know it's getting a little bit of mess. Okay, so tan 75 cannot be written as 90 minus 15 because we do not know the value for 15. Okay, yeah, okay, so now what is the other way we can write 75? Okay, so we can write it as 45 plus 30. Will this work? Yes, of course it will. Okay, so yeah, let me just decide. Okay, tan 45 plus 30. Okay, now let's try putting it in the form of identity. So it would be tan 45 plus tan 30, 1 minus tan 45 tan 30. Okay, so what is the value for tan 45? It's 1. Is it 1? Yep. Tan 30, it's 1 root 3, and 1 minus tan 45, it's 1 into 1 root 3, so it would be 1 plus 1 root 3, and then 1 minus 1 by root 3. So let's try taking the LCM. It will be root 3 plus 1 by root 3. It will be root 3 minus 1 by root 3. Root 3 will get cancelled, and it will be root 3 plus 1 by root 3 minus 1. So this is the value we are obtaining for tan 75. Now cos 82 degrees. It can be written as 7 plus 5 gives you 12. So it might be 37 plus 45. Okay, so it is. So cos 45 plus 37. Now let's just go back and look at the standard triangle which I told you about. Cos 37 is what we need right now. So it would be 4 by 5. Okay, so yeah. Okay, so it's going to be, first of all, let's expand this. It will be cos 45 cos 37 minus sine 45 sine 37. Now cos 45 is 1 by root 2 into cos 37, it's 4 by 5. Is it 4 by 5? Let me just go. Okay.
and sine 45 is 1 by root 2. Sine 37, okay, sine 37, it's 3 by 5. It's 3 by 5. Okay, so it would be 4, 5 root 2 minus 3, 5 root 2. It would be 4 minus 3, 5 root 2. It would be 1 by 5 root 2. It's the value we're getting for cos 82 degrees. Okay. Similarly, if you want to try more questions, you can just write them. Tan 105, tan 113, tan 74, cos 106. Okay, so now there is a concept. It goes like small angle approximation. So when angle is less than 10 degrees, what you can do that? Okay, so it's for when the angle is less than 10 degrees. Okay, so you can just approximate them. Okay, so if the angle is less than 10 degrees, let's say it's sine 3 degrees. Okay, so what it would be? So sine theta is approximately equal to theta. And yeah, here is one thing to take care of, is that theta which you are taking, the angle, I mean, it has to be in radians. Let's say it's tan 3 degrees. Then it has to be tan pi by 60. Okay, we can't just say tan 3 degrees is equal to 3. No, you have to convert that into radians, and then that radian. Okay, so let's say it's tan pi by 60, or it's sine pi by 60. It would be equal to pi by 60. It can't be equal to sine 3 degrees equal to 3. No, it can't be. Okay, make sure that the thetas should be in radians. Okay, then for tan theta is approximately equal to theta, and for cos theta the answer is approximately equal to 1. Yeah, do not get confused. Sine theta and tan thetas are approximately equal to theta if the angle is less than 10 degrees, and for cos theta it's approximately equal to 1. Yeah, do take care, they have to be in radians. Okay. Do you want to know how can we actually use this concept in questions? Let's say we have to find the value for sine 2 degrees. Okay, so now, as you know, sine and the theta, if the theta is less than 10 degrees, then this will equal to the theta. Now we cannot just write it as 2. Okay, we have to convert 2 degrees into radians first of all. Okay, so 2 into, how do we convert it into radians? 2 into pi upon 180. So it would be, okay, so it would be pi by 90 radians. Okay, so now sine pi by 90 radians, okay, would be approximately equal to pi by 90. Okay, and similarly you can find for cos 5 degrees, cos 7 degrees. Okay, now as you know that cos, if it's less than, the theta is less than 10 degrees, it would be approximately equal to 1. So yeah, there's nothing more to say. Okay, now the next question is tan 10 degrees, let's say. Okay, so now let's convert 10 degrees into radians. So tan into pi by 180, which would be equal to pi by 118. Okay, so it's 18 actually. So it would be 10 pi by 18 would be approximately equal to pi by 18. Now I have a question for you, and we'll be discussing it in another video. Bye bye.